ফ'কাছ ভিজন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে আজি মই লৈ আহিছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং জিলা মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চল নগৰবাহীত। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যি এমাহজোৰা উপবাস, এই এমাহজোৰা উপবাসৰ অন্তত আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। আৰু এনেদৰে সমিলমিলভাৱে এই অঞ্চলৰ লোকসকল ওলাই আহিছে একত্ৰিত হৈ সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ। আৰু এই ঠাইখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই তাৰ আশে পাশে বিভিন্ন ধৰণৰ কোচ, বামুণ, গোহাঁই তেনেকুৱা সমাজৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হৈ পেলাই মুছলমানলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈ এনেদৰে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু প্ৰায় এই অঞ্চলৰ 70-80% লোক হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা মুছলমান ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হোৱা। আৰু এনেদৰে যি জলজলি, নাহৰবাৰী, ঔটোলাকে ধৰি বিভিন্ন যি নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ আছে, এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ সময়ত 1616 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আশে পাশে সেই সময়ছোৱাৰ পৰা এনেদৰে যি সতীদাহ প্ৰথা বা উগ্ৰ যি হিন্দুত্ববাদ, যি বামুণত্ববাদ আছিলে, সেই বামুণত্ববাদ, উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদ বা যি সতীদাহ প্ৰথা, এইবোৰক আওকাণ কৰি নেওচি এনেদৰে মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেদৰে এই অঞ্চলটোত 80% লোক যি সনাতনী সভ্য সংস্কৃতিৰ পৰা ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তেনেদৰে আজি সকলো সমিলমিলভাৱে যি বছৰ জোৰা ঈদৰ এই যি আয়োজন চলি আছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো আজি এনেদৰে সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ সকলো আহিছে। তাৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক আমি ক্ৰমান্বয়ে ভিতৰলৈ আগবাঢ়ো। আপোনালোকে চাইছে ফ'কাছ ভিজন নিউজ অসম নৰ্থ। अरे भाई, पहले आँख से मिलती है, फिर दिल में फलसफे पैदा होते, उसके बाद इंसान का ये कदम सीना की तरफ बढ़ता है। सीना की पहली सीढ़ी है बदलिका की। इसने क्या दिलाओ इन्हें सैयदा फातिमा ज़हरा की कि जिनका कभी पर्दा नहीं छूटा। और हजरात, आजकल हम मुसलमानों को देख रहे हैं, जहां तो पैसे आए तो उनकी बोली भी बदल गई। अब सेठ जी की बोली बदल गई। पहले सेठ जी के घर में पर्दा होता था, मगर जहां 2-4-10 लाख करोड़ आए, उसके बाद अब सेठ जी कह रहे हैं, आओ नबी की सहाबिया का अमल देखें। हजरत उम्मे खल्लाद, सुनिएगा गौर से, हजरत उम्मे खल्लाद मेरे नबी की सहाबिया हैं। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था, जवान बेटा था और वो वहीं पर शहीद हो गए। जब उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया, ये मतलब तुम्हारा इस हीरा में हमारी इसलिए मैंने मुस्ताफे बने पर्दा के बने हिजाब के अपनी बेटियों को पहनने डालने दीजिए। बोला लगे मुझे इज्जत है। आज हम ये देखते हैं कि अगर किसी औरत, किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, मैयत के पास बैठी है, रो रही है, बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है। लोग सुन्नी मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत करम करे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और कुछ कहना चाहता था, वक्त बहुत हो गया, ज्यादा वक्त लिया, उसके लिए माजरत। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह के नबी की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। এয়া আছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ পৰা কিছু নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ নগৰবাহীৰ কৰিমিয়া দাৰুল উলুমৰ ঈদগাহ মৈদানৰ সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ। আৰু এনেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা, সুদূৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা ইমামৰ অধীনত এই নামাজ আদায় কৰিলে এইসকল ৰাইজে। আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ আছিল, এই পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ, ফ'কাছ ভিজনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱালোঁ। সমগ্ৰ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত সংগতি ৰাখি এনেদৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং জিলাৰ মঙলদৈ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চল নগৰবাহীত লোকে লোকাৰণ্য হৈ এনেদৰে আদায় কৰিলে ঈদৰ নামাজ। আপোনালোকে ফ'কাছ ভিজনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। আৰু এনেদৰে ঈদ উল ফিতৰৰ উপলক্ষে এই নগৰবাহী কৰিমিয়া দাৰুল উলুমৰ যি ঈদগাহ মৈদান আছে, আৰু এনেদৰে ঈদগাহ মৈদানত একত্ৰিত হৈছে সকলো
ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আৰু এনেদৰে আজি সমূহীয়া যি ঈদৰ নামাজ আদায় কৰি তাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰকাশ ভূষণ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া এনেদৰে আজি যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে নগৰবাহী কৰিমীয়া দাৰুল উলুমৰ যি ঈদগাহ ময়দান আছে আৰু এই ঈদগাহ ময়দানত এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে আজি যি সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। अमीर लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं और अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह गरीब हजरात अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। अगर आज के अमीर से कहो कि अपने बच्चों को मदरसे में भेजो तो वो कहेंगे हजरत हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा। दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तो अलीम है, खबीर है, समीउ बसीर है। तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हैं। या अल्लाह हमारे दिलों में अपना खौफ अता फरमा। हुजूर की ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং জিলাৰ যি মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চল নগৰবাহী আৰু এই নগৰবাহী কৰিমীয়া দাৰুল উলুমৰ যি ঈদগাহ ময়দান আছিল আৰু এই ঈদগাহ ময়দানতে আজি ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ইয়াৰে যি অসমীয়া থলুৱা মুছলমান লোকসকল আছে আৰু এই মুছলমান লোকসকলে আদায় কৰিলে ঈদৰ নামাজ। আৰু যিহেতু সুদূৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেৰেলীৰ পৰা যিহেতু যিগৰাকী ইমাম আহিছে আৰু এই ইমামগৰাকীৰ অধীনতে ছত্ৰ ছায়াতে যিহেতু আজি সম্পূৰ্ণ ঈদৰ নামাজ আদায় কৰা হ'ল, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইমামগৰাকীৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। আমি যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে মত বিনিময় কৰিম আৰু তাৰ বাবে মই বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ ইমামগৰাকীৰ কাষত। এক্সকিউজ মি, তো आप बहुत दूर यूपी बरेली से आके यहाँ जो मुसलमान लोग हैं, ये तमाम मुसलमान लोगों को जो ईद उल फितर का नमाज अदा किया, इसी की वजह से आप सारे मुसलमानों को और असमवासी तथा भारतवासी दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुबह शाम के तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ये अपील करना चाहूँगा कि सूबा असम की तरक्की में अपना योगदान दें, हिस्सा लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सूबे में राज्य में अमन कायम करें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पेश करें, नफ़रतों की दीवारों को तोड़ें और इस्लाम जैसा सिखाता है मुसलमान वैसे अमल करें। मैं सूबा असम के तमाम मुसलमानों को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सूबा असम की सरजमीन को हमेशा सलामत रखे, इस सरजमीन को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। माशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उलमाए दीन की इज़्ज़त करते हैं, दीन का एहतराम करते हैं और अपने सूबे से भी बेपनाह प्यार करते हैं। इस सूबे से मोहब्बत के लिए मुसलमानों को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मुसलमान जहां दीन के लिए बेकरार रहते हैं, अपने सूबे के लिए भी बेकरार रहते हैं और मोहब्बतें पेश करते हैं। इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की नफ़रत का शिकार ना हों, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं और सूबे की तरक्की में बड़ा हिस्सा लें। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। धन्यवाद। आपको भी फोकस विजन न्यूज़ असम नॉर्थ ईस्ट की ओर से हार्दिक ईद का शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, जज़ाकुमुल्लाह। नगरवाही के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बतें पेश की, बड़ी मोहब्बतों से पेश आए। हाई ভিউয়ার্স, ইউ আর ওয়াচিং ফোকাস ভিজন নিউজ। মই বৰ্তমান ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং জিলা যি মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চল নগৰবাহী আৰু নগৰবাহীৰ যি কৰিমীয়া দাৰুল উলুমৰ যি ঈদগাহ ময়দান আছে আৰু ঈদগাহ ময়দানৰ পৰা যি ইয়াতে থলুৱা অসমীয়া লোককৃষ্টিৰ যি মুছলমান লোকসকল আছে, এই লোককৃষ্টিৰ যি মুছলমান লোকসকলৰ মাজত যি ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিপ ৱাচিং ফোকাস ভিজন নিউজ আছাম নৰ্থ।